So today let us sing chapter number 5. Title is Subhasit Vaibhavah. So Vaibhavah means prosperity, Sampatti. Subhasit Vaibhavah, Su means good and Bhasit means saying. So meaning of this title Subhasit Vaibhavah, it means prosperity in the form of good saying. Prosperity in the form of good saying. Let us see now introduction. First paragraph. In Sanskrit literature, the longest poetic work is known as Mahakavya, and we can say epic also. And the smallest poetic work is known as Muktaka. Muktaka, according to Gujarati, we can say Muktak. Very short poem, one type of poem that is called Muktak. Just as a single pearl is invaluable, so too are these small Muktakas, and these Muktakas are saying, we can say good saying, or subhasitas, or epigrams also. This well-known and melodious form of Sanskrit literature has the distinctive ability to serve in its 4 lines the precious teachings of life in the most aesthetic manner. From these epigrams we get the moral of ideal life and goodness. Such epigrams have been collected in this chapter, in this lesson. Now let us see introduction, second paragraph. In the epigrams chosen from this lesson, this poem, you will notice words with one type of case endings. These case endings will help you in learning the Sanskrit language. On the other hand, these epigrams will also provide you with inspiration to develop the values in them. The immortality of fame in this mortal world, greed as the basic cause of all sins, the ability to recognize friends and one's kin, the characteristics of good and bad people, etc. This will help you to make your life bright and virtuous. Now let us see first verse of this poem, but before that you all listen carefully. From this poem, verse number 2, that is Chalam Vittam Chalam Chittam, and verse number 5, that is Daridrai Dhanam Deyam. These two verses you have to learn by heart for complete the verses.
And all the 8 verses of this poem, all the 8 verses, you have to prepare for translation. Now let us see first verse. माधुर्य मह प्लस अक्षर व्यक्ति विसर्ग. माधुर्य मह प्लस अक्षर व्यक्ति विसर्ग. Sandhi is there. Then next word padachhedah visarg plus tu. Padachhedastu is equal to padachheda visarg plus tu. Madhuryam, it means sweetness. Akshar vyaktihi, it means clear pronunciation of sound. Padachhedah, it means division of stanzas. Suswarah, it means nice voice. Dhairyam, patience. Lay samartham cha, and proper tune. Sadete pathaka gunaha. Sadete is equal to sada plus ete. Sandhi is there. Sadete is equal to sad plus ete, and sad means 6. So these are the 6 types of virtues of the real reader. If you believe yourself great reader, or we can say real reader, then you also improve these 6 qualities. That is described here in this verse. Let us see once again the same. Verse number 1, Madhuryam means sweetness. Akshar vyakti, clear pronunciation of sound. Padachheda, division of stanzas. Suswara, nice voice. Dhairyam, patience. Lay samartham cha, and proper tune are the 6 types of virtues of the best reader, of the real reader. Next verse number 2, Chalam Vittam. Chalam Vittam means Vittam means wealth. So wealth is fickle. Chalam Chittam, mind is fickle. Chale Jivit Yovane, life and youth also fickle. Chala Chalam Idam Sarvam. Chala Chalam Idam is equal to, Sandhi is there. Chal plus Achalam Mahap plus Idam Mahap. Chal plus Achalam Mahap plus Idam Mahap. So Chal plus Achalam Mahap plus Idam Mahap. Sandhi is there. Chala Chalam Idam Sarvam. These are come and go again and again. Sarvam Kirti Revhi Jivati. Kirti Rev is equal to, Sandhi is there. Kirti then Visarg plus Evam. Kirti then Visarg plus Evam. Kirti Revhi Jivati. But only Hem is only alive, but Hem is only alive. Understood now? Second verse. Let us see verse number 3. Maksika vranam icchanti. Vranam maha plus icchanti. So flies want, bound.
धनम इच्छन्ति पार्थिवं, धनम महा प्लस इच्छन्ति संधि इज देयर. धनम इच्छन्ति पार्थिवाः. पार्थिवा means kings, and kings want wealth. Second line, नीचाः कलहम मिच्छन्ति is equal to कलहम महा plus इच्छन्ति. So wicked people want quarrel. शांतिम इच्छन्ति साधवः. शांतिम महा प्लस इच्छन्ति. शांतिम इच्छन्ति साधवः. साधवः means saint, sages, or we can say good people also. Understood now? According to this poem, sadhu simple meaning is saint or sage, but according to this poem we have to take another meaning. Sadhu means good people, good persons. Shantim icchanti sadhavah, and good person, good people want peace. Understood now? So मक्सी का व्रणम इच्छन्ति, जो मक्खी होती है उसे जो घाव होता है, जहाँ पर चोट आती है, वो उनको ज़्यादातर पसंद होता है. उस पर वो मंडराती रहती है. जरा सा भी घाव होगा तो मक्सी का व्रणम इच्छन्ति, फ्लाइज वांट वाउंड. धनम इच्छन्ति पार्थिवं, और राजा महाराजा जो होते हैं उनको वेल्थ, धन ज़्यादा पसंद होता है. सो किंग्स वांट वेल्थ. नीचाः कलहम इच्छन्ति, और जो निम्न कक्षा के लोग होते हैं, जिनकी थिंकिंग एबिलिटी डाउन होती है, निम्न कक्षा के लोग, वी कैन से विकेड पीपल वांट क्वारल, उनको झगड़ा ज़्यादा पसंद होता है. शांतिम इच्छन्ति साधवं, एंड गुड पीपल वांट पीस, और जो अच्छे लोग होते हैं उनको शांति पसंद होती है. गुड पीपल वांट पीस. लेट अस सी वर्स नंबर 4. गावो गंधेन पश्यन्ति. So पश्यन्ति here plural form, present tense परस्मै पद, थर्ड पर्सन प्लूरल, तीतः अंति. सो उसमें रूट वर्ड है यहाँ पर पश्य, दृश्य और पश्य, इट मीन्स टू सी. बट वी हैव टू टेक हियर अनदर मीनिंग इंस्टेड ऑफ टू सीइंग. सिंपल मीनिंग होगा गावो गंधेन पश्यन्ति, इट मीन्स cows see by smell, but we have to take here another meaning instead of this. Pashya means to see, but we have to take another meaning, it means identify. So cows identify by smell, gandhen. So cows identify by smell. Vedehi pashyanti brahmanah, Brahmins identify by Vedas. It means कि ब्राह्मण वो वेदों से जाने जाते, पहचाने जाते हैं, जिसको 3 वेदास का नॉलेज होता है, 4 वेदास का, उसे चतुर्वेदी कहते हैं. जो 3 वेद का नॉलेज होता है वो ब्राह्मण को त्रिवेदी कहते हैं. जो 2 वेद का नॉलेज होता है वो ब्राह्मण को द्विवेदी कहते हैं, और जो 1 वेद का नॉलेज होता है उसे वेदी. ब्राह्मण आइडेंटिफाई बाय वेदास. चारे ही पश्यन्ति राजानः,
Rajanashchaksurvyam itare janaham. So whole word sandhi is there. Rajana, then visarga plus only cha. Chaksurvyam maha plus itare. Once again I repeat, sandhi is there. Rajanah visarga plus chaksurvyam maha plus itare. चारे ही पश्यन्ति राजानः. So Rajanah means king. So kings identify by spying. Kings identify by spying. जो राजन वो उनके जो जासूस होते हैं उनके जरिए ऑल द डायरेक्शन उसमें वो अपने स्पाई जासूस रखते हैं और उसके जरिए वो ऑल टाइप ऑफ नॉलेज वो रखता है और इससे वो जाना जाते हैं, पहचाना जाते हैं, अंडरस्टूड ना नॉलेजेबल कहलाते हैं. सो किंग्स आइडेंटिफाई बाय स्पाइंग. चक्षुर्भ्याम इतरे जनाः. And simple man see, or we can say identify by eye. Chaksurvyam itare janaham. Simple man see by eyes. Simple man see by आई. इट मीन्स कि जो सिंपल ह्यूमन बीइंग होते हैं वो ओनली ये जो आई से आँखें उससे ही वो देखते रहते हैं. बट जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो गॉड की अनुभूति करनी है, गॉड को देखना है, तो ये आँखें सिंपल ह्यूमन बीइंग की जो ये आँखें वो उससे उनको देख पाएगी नहीं. उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा, आँखें बंद करके मन की आँखों से उनको देखना पड़ता है. अंडरस्टूड ना. उनकी अनुभूति तभी हो सकती है लाइक गौतम बुद्ध मेडिटेशन में वर्षों तक बैठे, ये आँखों से उनको अनुभूति हुई नहीं, तो वर्षों बाद उनको अनुभूति हो गई गॉड. और उन्होंने सिद्धार्थ अर्लियर ही वॉज नोन, और तब उनको डिटैचमेंट हो गया संसार से जब उनको रियल बात गॉड की अनुभूति हो गई और उन्होंने संसार का त्याग किया और गौतम बुद्धा बन गए. ये सब हम जानते हैं. So example of that one, simple man see by eye. Let us see verse number 5. Afterward, verse number 5. Daridrai dhanam deyam jnanam deyam jadai jang. Daridrai dhanam deyam jnanam deyam jadai jang. Deyam here potential participle. It means vidyartha krudant deyam. Pipasitai paniyam. Again paniyam also potential participle. It means vidyartha krudant paniyam. Suditai cha bhojanam. Daridrai dhanam deyam. It means we should give wealth to the poor. Jnanam deyam jadai cha. We should give knowledge to intelligent. Pipasitai paniyam. We should give water to the
thirsty, Sudhitai cha bhojanam, and we should give food to the hungry. Let us see verse number 6. Lobhat krodha is equal to lobhata taha plus krodha visarg. Lobhataha plus krodha visarg krodha. Anger is born by temptation. Lobhat krodha prabhavati. It means anger is born by temptation. Lobhat taha plus kama visarg. Lobhataha plus kama visarg. Lobhat kamaha prajayate. Desire is born by temptation. Second line, Lobhan mohascha is equal to, sandhi is there, Lobhataha plus moha visarga plus only cha. Lobhataha plus moha visarga plus only cha. Next word also write sandhi nasascha is equal to na sa visarga plus only cha. Lobhat mohaha cha nasaha cha. So attraction is born by temptation and destroyed by it. Lobha papasya karanam, because temptation is the main reason, main root of sin. Because temptation is the main reason, main root of sin. Let us see verse number 7. Takshakasya visam danteng. Takshak, so deadly poisonous snake. Earlier, according to our culture, that is called takshak. Takshakasya visam danteng. Poisonous snake contain poison only in the teeth. Makshikaya visarga plus only cha. Makshikaya visarga plus cha. Makshikayaha cha mastake. Flies contain poison only in the head. Vrustikasya visam pucheng, and vrustik means scorpion. Scorpion contain poison only in the tail. Vrustikasya visam pucheng, it means scorpion contain poison only in the tail. Sarvange durjanasya tata. Sarva plus ange is equal to sarvange. Durjanasya tata. But bad person contains poison in all the body parts. But bad person contain poison in all the body parts. It means poet यहाँ पर हमें समझाना चाहते हैं, पोएट यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि स्नेक, उसका तो पॉइजन ओनली वन बॉडी पार्ट में ही होता है, दैट इज टीथ। वो भी ऊपर के जो टीथ उसके होते हैं उसमें ही वो भी वही ओनली पॉइजन, उसमें ही पॉइजन होता है। और जिससे ये ट्रिक आती है
वो जो स्नेक के वो तेज निकाल लेते हैं, इट मीन्स वो स्नेक के काटने पे इंसान की मौत होती नहीं, क्योंकि वो पॉइजन निकाल लेते हैं। कुछ लोगों को ये ट्रिक आती है। और मक्सीगन फ्लाइज, particularly this season, flies contain poison only in the head. फ्लाइस मक्खी जहाँ जहाँ पर मंडराती हैं, जहाँ जहाँ पर जनरली फूड उस पर, वो आके वहाँ पर पहले गंदगी में बाहर जाके बैठते हैं और वही गंदगी फैला दिए, कहाँ लेके आती है? डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स जो रोड के साइड में आप मज़े से यूँ खा रहे हम, स्वीट, कचौरी, समोसा, ऑल दिस थिंग्स, फास्ट फूड वी कैन से। सो ये सब में फ्लाइस वहाँ पर पॉइजन वो रख के जाती हैं। अंडरस्टूड नाउ? सो फ्लाइस कंटेन पॉइजन ओनली इन द हैंड एंड स्कॉर्पियन कंटेन पॉइजन ओनली इन द टेल। तो ये सबसे डेंजर कौन है? सबसे खतरनाक कौन होते हैं? बैड पीपल। Bad people contain poison in all the body parts. That's why great people explain करते, हमें समझाते, कह कर गए कि do the company of good people and we should give up the company of bad people. Understood now? That's why, because bad people contain poison in whole body, all the body parts. Understood now? Yes. Let us see now last verse, verse number 8. Utsave vyasane chaiv च प्लस एव इज इक्वल टू चैव, संधि इज दर। उत्सविंग, अ मैन who stand in a festival, व्यसनिंग, in a difficulty, दुर्भिक्ष से, in a drought or we can say famine, शत्रु विप्लविंग, in a war with enemy। Second line, Rajadware, at the door of royal palace, Smasane, and in a cremation place, Yaha Tishtati, Yas Tishtati is equal to Sandhi is there, Ya Visarga plus Tishtati, Ya Visarga plus Tishtati, Yas Tishtati Saha Bandhavah, the one who stand with us is our friend or real friend, or we can say Bandhava means relative. Understood now? Let us see once again the same verse. Utsave, in a festival, vyasane, in a difficulty, durbhikshe, in a drought or famine, satru viplave, in a war with enemy, Rajadware, at the door of royal palace, Smasanecha, and in a cremation place, Yatishtati ta saha bandhavah, the one who stand with us is really our friend or relative.
Understood now?